Hi students, myself Mohit Dake. Welcome you to Shiksha.com educational YouTube channel. Now today we will study about average. Average is one of the most important topic of aptitude, and all of you may know that aptitude is one of the important part of exam. In all the government competitive exams like GATE exam, engineering services exam, aptitude plays a major role. And also, if you are preparing for placement, then you have to clear the aptitude round. Then only you will go for interview. So aptitude is the basic need, and average is one of the most important topic of aptitude. So we will study today average. We will study step by step from the basic. So first of all, we will see what is average, what are the general terms associated with average. Then we will see some numericals based on it. This is the part 1 of average. This is the basic part. So we will increase the difficulty level of in the part 2nd. So first we will see the basic part of average. So first of all, what do we mean by average? Average is also known as arithmetic mean. What is average? Average is also known as arithmetic mean. तो average क्या है students? Average is nothing but the arithmetic mean. अभी एवरेज कैसे कैलकुलेट करने का ये देखेंगे हम. सो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर calculating any mean, the two quantities must be similar, like weight should be in kgs, height should be in centimeters. Means for example, अगर आपको 5 kg शुगर दिया है और 500 ग्राम शुगर दिया है और आपको बोला है कि उसका एवरेज निकालो, तो आप एवरेज नहीं निकाल सकते, पहले यूनिट सेम करना जरूरी है. सो नोट इन योर पॉइंट्स दैट units must be same. You can calculate average if only the units are same. So what is the general formula to find of average of n numbers? Average of n numbers is equal to sum of n numbers upon n. So students, average का formula क्या है? Average of n numbers is equal to sum of n numbers divided by n. If there are 5 numbers, अगर मान लीजिए आपको 5 नंबर दिए और 5 नंबर का एवरेज पूछा है, तो इधर n की वैल्यू 5 आ जाएगी. तो हम ये हो गया एवरेज का फॉर्मूला. अभी हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सम की वैल्यू निकाल सकते हैं. सम ऑफ एन नंबर्स इज इक्वल टू मीन ऑफ एन नंबर्स इनटू एन. अब बच्चों, आप सब क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में रन रेट होता है. आप बहुत लोगों को बता रहेगा कि रन रेट क्या होता है, लेकिन वो कैसे निकालने का ये बहुत कम लोगों को बता रहेगा. तो कोई बात नहीं, आज हम सीख लेंगे कि रन रेट भी कैसा निकालते. तो रन रेट के लिए ये फॉर्मूला है, टोटल नंबर्स ऑफ रन्स स्कोर्ड अपॉन नंबर ऑफ ओवर्स. So to calculate run rate, this is the formula. Run rate is equal to total number of runs scored upon number of overs. So I hope all must have understood the basic formula and basic introduction of average. Now we will see some problems. अभी हम problems देखेंगे average से related. तो ये आपका first problem. इसमें क्या दिया है? The arithmetic mean of 15 numbers is 41.4. The sum of these numbers is dash. अभी इसमें एवरेज दिया है 15 नंबर्स का और हमें सम पूछा है. तो आपको बताया था कि एवरेज ऑफ n नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ n नंबर्स अपॉन n. Here there are 15 numbers, so the value of n is 15. So we will find arithmetic mean of 15 numbers, that is average of 15 numbers is equal to sum of 15 numbers upon n. What is the value of n? 15. So substitute the value what it is given in the question. Arithmetic mean of 15 numbers is 41.4. Sum of 15 numbers is unknown, we have to calculate it. And what is the value of n? That is total number is 15. So by doing cross multiplication, you will get sum of 15 numbers is equal to 41.4 into 15. If you will perform the calculation, then you will get the answer 621. So what is the final answer? Sum of 15 numbers is equal to 621. So first of all, read the question carefully, then apply the basic formula. Now we will see the second question. Now what it is given in the second question?
if 25A plus 25B is equal to 115, then what is the average of A and B? Read the question carefully. What it is given? क्या दिया है? If 25A plus 25B is equal to 115, then what is the average of A and B? हम लोग को इसमें एवरेज ढूंढना है ए एंड बी. अभी बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि ए और बी की वैल्यू ढूंढेंगे और ऑप्शन में भी रहेगा वो तो टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत है. हम लोग को एवरेज ढूंढना है ए और बी का. सो हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 15. देन वी विल टेक 25 कॉमन. You will get in bracket a plus b is equal to 115. So 25 will go there. A plus b is equal to 115 divided by 25. If you will perform the calculation, then you will get the value of a plus b is equal to 4.6. Now we will calculate the average of a and b. They have not asked for sum of a plus b, or they have neither asked for to find the numbers a and b. They have asked to calculate the average of a and b. So what is the formula for average? Sum of n numbers upon n. The sum of n numbers is a plus b upon, there are two variables a and b, so n is equal to 2. So you will get 4.6 upon 2, that is 2.3. Now we will see the next question. The average of reciprocals of x and y is dash. अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? The average of reciprocals of x and y. So reciprocal of any number is 1 upon that number. So the average, the reciprocal of x and y will be 1 by x and 1 by y respectively. So what is the formula for average? Average is equal to sum of n numbers upon total numbers, that is n. So sum of these reciprocals will be 1 by x plus 1 by y upon 2. So if you will perform the cross multiplication, you will get x plus y upon xy divided by 2. So further perform the calculations, you will get x plus y upon 2xy. So अगर आपको एग्जाम में किसी भी दो नंबर का रेसिप्रोकल्स का एवरेज पूछा है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि x प्लस वाई अपॉन 2xy. अब मान लीजिए आपको अगर पूछा द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 5 and 4 इज डैश, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 4. सो यू विल गेट द एवरेज. आई होप ऑल मे हैव अंडरस्टूड अप टू दिस. अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे. द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज एक्स वाई. इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्स, देन व्हाट इज द अनदर नंबर. अभी इस केस में क्या दिया है? द एवरेज दिया है और नंबर दिया है एक्स, और हम लोग को पूछा व्हाट इज द अनदर नंबर. So let we assume that the second number be a. So what is the formula for average? Sum of the numbers upon total numbers. The sum of the numbers will be x plus a, because one number is x and second number is, we have assumed a. So sum will be x plus a divided by total numbers. There are two numbers given in the question. So we will divide by 2. And what is the average given? xy. You can see here xy is the average given. So x plus a upon 2 is equal to xy. Then perform cross multiplication. You will get a plus x is equal to 2xy. You will get the value of x. A is equal to 2xy minus x. So आप सभी को ये क्वेश्चन पता चल समझ में आया होगा. ये सब बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. If basic is not clear, then you cannot solve any problem. But if basic is clear, then you can solve n number of problems. So understand the concept and also start from the basic problems, even though if you know. See now, the second, we will see the next question. The total marks obtained by a student in physics, chemistry and maths together is 120 more than the marks obtained by him in chemistry. तो क्या दिया है? एक बच्चा है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में 120 मोर मार्क्स मिले हैं जितने एज कंपेयर टू केमिस्ट्री. सो व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टुगेदर. तो क्वेश्चन में दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के मार्क्स 120 मोर देन केमिस्ट्री है.
और हमें पूछा है कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय इन फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स के एवरेज पूछा है। सो इट इज वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल we will consider that let the marks obtained in physics, chemistry and maths be P, C and M respectively. It will be easiest to you for calculation. So what is given in the question? See, read the question once again. The total marks obtained by a student in physics, chemistry and maths is 120 more than the marks obtained in chemistry. So we can write like this: P plus C plus M is equal to 120 plus C, where P, C, M are physics, chemistry, maths and C is chemistry. So if you will perform the calculation, you will get P plus M is equal to 120. अभी बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या गलती करेंगे, ऑप्शन में 120 रहेगा, 120 गाई गाई में टिक भी कर देंगे। लेकिन बच्चों ऐसी गलती करना मत, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स, एवरेज पूछा है ऑब्टेन्ड बाय हिम इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टुगेदर। सो हमें एवरेज मार्क्स निकालने। So how to calculate average? Average marks obtained in physics and maths is equal to sum of the marks scored in physics and maths divided by total number of subjects. So here the sum is given 120 and total subject is 2 physics and maths. So 120 by 2 you will get 60. So what is the final answer? Average marks obtained in physics and mathematics is 60. अभी हम अगला सवाल देखेंगे। The average marks obtained by a student in 4 subjects is 75. अभी इसमें क्या दिया है, एक बच्चा है उसको 4 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स दिए 4 सब्जेक्ट्स के और वो 75। इफ द स्टूडेंट ऑब्टेन 80 मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट देन द न्यू एवरेज इज। अभी इसमें क्या बोला है कि जो स्टूडेंट है उसको 5th सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं, 80 मार्क्स। सो हमें न्यू एवरेज पूछा है। तो आप सभी को पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या है, average is equal to sum of all upon divided by total number of subjects. So here sum of marks in 4 subjects divided by total subject, that is 4, is given as 75. So you will get the sum of marks obtained in 4 subjects, that will be 75 into 4, that is 300. And they have told that student obtained 80 marks in the 5th subject. 5th सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट ने 80 मार्क्स स्कोर किए है और हमें पूछा है कि नया एवरेज। तो नया एवरेज जो आएगा वो 5 सब्जेक्ट्स का आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 5 सब्जेक्ट्स, दैट विल बी सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 4 सब्जेक्ट्स प्लस 80, दैट इज 300 प्लस 80, यू विल गेट 380. So what will be the new average? New average is equal to sum of marks obtained in 5 subjects divided by total number of subjects, that is 5. So you will get 380 upon 5, that is 76. So 76 is the final answer. Now see the next question. Slightly there is increase in difficulty level, but it is very easy. Understand the concept. The mean of 5 numbers is 18. What is given? Mean of 5 numbers is 18. If one of the number is excluded, their new mean is 16. If we exclude one of the number, then the new mean is 16. So we have to find the excluded number. So sum of average की formula क्या है? Average is equal to sum of all numbers divided by total numbers. So average is given as 18 and there are total 5 numbers. So we can calculate sum of 5 number is equal to mean into total numbers, that is 18 into 5, you will get 90. Now see the next condition. If one of the number is excluded, means if one of the number is excluded, then there will be 4 numbers remaining and average of 4 numbers is given as 16. So sum of 4 numbers will be 16 into 4, that is 64. That is average into numbers, total numbers, that is 16 into 4 is 64. So we have to find the excluded number. So हम excluded number कैसा ढूंढेंगे अभी? Sum of 5 numbers minus sum of 4 numbers. ये दोनों की वैल्यू आप सभी को पता है,
हम लोग ने ऊपर निकाल लिया है. Sum of 5 numbers is 90, sum of 4 number is 64. So if you will subtract it, you will get 90 minus 64, that is 26. So 26 is the final answer. Now students, see the next question. What it is given? The average weight of 16 boys in a class. अब मान लीजिए क्लास है, उसमें 16 बॉयज है और उनकी एवरेज वेट कितनी दी है? 50.25 kg. And that of remaining 8 boys is 45.15 kg. 8 boys का वेट कितना दिया है? Average weight 45.15 kg. Find the average weight of all the boys in the class. अभी हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने क्लास में? 16 plus 8, that is 24. So we have to calculate the average weight of all the 24 boys. So first of all, what is given in the question? The average weight of 16 boys is 50.25 kg. So we can calculate sum of the weight of 16 boys. That is 50.25 into 16. So you will get 804. Now what another condition is given? That of the remaining 8 boys is 45.15 kg. So you will get sum of the weight of 8 boys. That is 45.15 into 8 is equal to 361.2. Apply the basic formula, that is average is equal to sum of n numbers divided by n. You will get the weight of 16 boys also, and you will get the sum of the weight of 8 boys also. So we know that class contains 24 boys. So what will be the average weight of 24 boys? Sum of the weight of 16 boys plus sum of the weight of sum of the weight of 8 boys means 16 plus 8. You will get all the sum of the weight of 24 boys divided by total number of boys, that is 24. So substitute the value 804 plus 361.2 divided by 24. So you will get the final answer, that is average weight of 24 boys is 48.55 kg. अब बच्चों जितने भी क्वेश्चन किए अब तक, तो देखो आपको बोला था पहली कंडीशन, टू कैलकुलेट द एवरेज द वेट द यूनिट मस्ट बी सेम. अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें यूनिट क्या था? केजी, इधर भी केजी, इसलिए हम एवरेज कैलकुलेट कर पाए. अब मान लीजिए कि एक केजी में रहता और दूसरा ग्राम में, देन फर्स्ट वी हैव टू मेक द यूनिट सेम, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द एवरेज. अब ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्रिकेट मैच सभी लोग देखते होंगे. सो इसमें क्या दिया है? इन द फर्स्ट 10 overs ऑफ अ क्रिकेट मैच द रन रेट वाज ओनली 3.2. सो आई हैव told you little bit about run rate and I have told you the formula how to calculate the run rate. So इसमें क्या दिया है? In the first 10 overs of a cricket match the run rate was only 3.2. तो first 10 overs में run rate था टीम का 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs? तो अभी उन्होंने पूछा है कि 40 overs में कितना रन रेट चाहिए. So we can achieve the target of 282 runs. So first of all, run rate is average and I have told you how to calculate the run rate. So how will you calculate the run rate? Run rate is equal to total number of runs upon total number of overs. So here runs scored in 10 overs we can calculate easily. That is runs scored in 10 overs is equal to run rate in 10 overs multiplied by total number of overs, that is 10. So run rate in 10 overs is given as 3.2. Total number of overs is given as 10. So 3.2 into 10, 32. So runs scored in 10 overs is 32 and we have to achieve the target of 282 runs. So runs to be scored in 40 overs will be target minus runs scored in 10 overs. And what is the target? 282 and runs scored in 10 overs is 32. So you will get 250 as the answer, means 250 you have to score in 40 hours. So we have to calculate the run rate of that 40 overs. So run rate in 40 overs will be runs to be scored in 40 overs upon total number of overs. And runs to be scored in 40 overs is 250 upon 40. So you will get 6.25. So इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि 10 ओवर्स में टीम का रन रेट था 3.2
और पूछा था 40 ओवर्स में कितना रन रेट चाहिए, so that we can achieve the target of 282 runs. So the required run rate is 6.25 runs per hour over. So uh, that was it. That was the last question. I hope all must have understood. अगर आप किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू.